My dear friends, so in this way we have seen the Bernoulli equation, and that Bernoulli equation we have seen all the terms per unit volume in that form. So this is the discussion, and the discussion is connected to the next form of Bernoulli equation, head form. So note on the heading please, Bernoulli equation head form. Bernoulli equation, and this is the word head form. Energy per unit weight. But just of all, note down the statement here. It is the representation of energy. It is the representation of energy in terms of height of fluid column. In terms of height of fluid column. I repeat, it is the representation of energy in terms of height of fluid column. अभी हम लोग क्या दे बर्नौली इक्वेशन पर यूनिट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. दिस इज एनर्जी per unit weight form here. ठीक है. This is the terms here, that is what P by rho g plus V square by 2g plus Z is equals to what? Constant. अगर एक ही term जो यहाँ लिखा है, this is the what pressure head, this is velocity head or kinetic head, and this is datum head or potential head. देखिए, so this is the first one, pressure head. The next one, velocity head, or kinetic head, and this is potential head or datum head. अब ये पर यूनिट वेट के फॉर्म में कैसे लिखे हैं, एक रिएक्शन आपको क्रिएट कर दे रहा हूं. देखिए माय डियर, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूंगा, सो दिस इज द व्हाट यू कैन से हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दिस इज आई एम गोइंग टू डिवाइड एम जी. देखिए क्या है, वेट से डिवाइड कर दिया, और वेट से डिवाइड कर दिया तो मास तो आपको क्या हो गया, कैसे बचा कुछ क्या, वी स्क्वायर बाय 2g. सो दिस इज वी स्क्वायर बाय 2g, और वी स्क्वायर बाय 2e. The next, I'm going to talk about the word datum head. So this is energy, is what you can say mgz, and this is divided by mg. This cancels is equals to what? Z. My dear, this is your time. First of all, pause your video, note down this one, do it fast. Done. My dear, my next discussion that is connected to two terminologies here. एक बात होती है टोटल हेड की टर्मिनोलॉजी की, और दूसरी बात होती है पीजोमेट्रिक हेड की टर्मिनोलॉजी की, जो पूरे सब्जेक्ट में काम करेगी. तो जरा देख लीजिए, दिस डिस्कशन इज ओवर टोटल हेड. Total head. So this is what P by rho g plus V square by 2g plus Z.
total energy in the head form. Piezometric head. So the next is piezometric head. Piezometric head. और बच्चों हम piezometric head की बात कर रहे हैं. So that is a summation of pressure head plus datum head. My point of discussion that is connected to application, क्योंकि अब तो आगे application ही start होना है. क्या फ्लो हो रहा है? तो बेटा फ्लो हो रहा है हायर हेड टू लोअर हेड लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल होगा, क्योंकि फ्लो के डायरेक्शन में एनर्जी लॉसेस होने इन रियल. So I'm going to take application case connected to what pi. Look. So this is a case application case and case is connected to pi flow. अच्छा मैंने पाइप ले लिया. So this is what pipeline is. And this is I'm going to take center line, and the flow is coming like this. ये फ्लो आ रहा है. अब अगर ये फ्लो आ रहा है and I'm going to apply the energy equation between 1 and 2. So this is I'm going to take 1 and this is I'm going to take 2. 1 sections. अगर कोई ये कह दे कि 1 पे एनर्जी और 2 पे एनर्जी बराबर है, दैट मींस बर्नौली. अगर कोई ये कह दे कि दैट द एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू एनर्जी एट 2, here energy and here energy same, that means Bernoulli, क्योंकि according to Bernoulli energy is what constant. लेकिन in practical if you are looking, so whatever here that is energy at 1 is equal to energy at 2 plus in between this head loss is there. This is Bernoulli, this is modified Bernoulli, the head loss, but both you are going to say that this is and this is energy equation. So that's why in the subject, in the whole subject, you will see I am going to use a word energy equation. I am not going to write apply Bernoulli equation from this to this. Simply I am going to write energy equation. In that I will cover this as well as this both. और जब मैं ये लिखता हूँ कहीं पर तो मैं लिख देता हूँ theoretical. और जब मैं ये लिखता हूँ कहीं पर तो मैं लिख देता हूँ actual. ये तो theoretically आप बोल रहे हो ना कि energy here and energy here is what? Same. In actual, there is a what? Head loss is there. So simply I am saying in the whole subject I will use the word energy equation, apply energy equation from this to this. If somewhere I am going to take the name of Bernoulli equation, definitely आप समझ जाना कि सर वहां पर रीजनिंग डिस्कस कर रहे हैं. Somewhere if I am going to take the word Bernoulli word, if I am using somewhere, that means my interest is to discuss reasoning part there. तो इसको रब कर रहा हूं. एक तरीके से अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा ये है कि मान लीजिए कि दिस इज व्हाट यू कैन से 20 मीटर, दिस इज यू कैन से 12 मीटर हेड, सॉरी दिस इज 20, दिस आल्सो व्हाट 20 बराबर, दिस इज व्हाट यू कैन से 20, दिस टू यू कैन से कि दैट दिस इज यू कैन से 18 मीटर and this head loss equals to what? 2 meter. Getting point. अब जब इक्वालिटी लगाओगे तो लिखोगे तो बराबर ही. इस केस में तो आप बोल रहे हो कि जो एनर्जी है यहाँ की वही एनर्जी यहाँ की है, which is theoretical talk. But in actual, energy here is more. Here it is comparatively less, and whatever be the difference, that is the head loss. And we have a separate discussion in a chapter like pi flow related to what head loss calculation. अभी तो बस एक रिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा, पूरे पूरे टॉपिक चल रहे हैं हेड लॉस पे. तो there is no need to note down this one. I am going to write this again. So my point of discussion here
कि ये जो लॉस है ये किस टर्म में रिफ्लेक्ट हो रहा है. In a horizontal case, if you are looking, my dear, so for this and for this, Z1 is equals to what? Z2. Z1 क्या है? Datum level है. जैसे कि this is the pipeline here, and this you have taken an arbitrary datum. This is the arbitrary datum level pipeline ये है. So Z is this. Z is this. एक clear कर मैंने. Z is this. Should be clear. Next. My point of discussion. If there is a flow, then I am going to apply the water continuity equation. So this is apply continuity. और बच्चा मैं क्वांटिटी अप्लाई कर रहा हूं तो आई एम गोइंग टू से 1v1 इज इक्वल टू a2 v2. बच्चा मेरा स्मार्ट, बच्चा मुझे ये बताने जा रहा है, बच्चा मुझे ये बताने जा रहा है कि किस जगह एरिया जा रहा है. Area is not same. That means I am saying whatever velocity here, that is what. So I am going to say here that this E1, A2 cancel, E1 is equal to what? E2. But now I am going to apply the energy equation between 1 and 2. Apply energy equation. Apply energy equation between 1 and 2 sections. So if I'm going to add this thing, then ultimately what will happen here? So this is P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 total head here. Higher head to lower head flow. So this is P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus HL. I have taken head loss. So my dear, I am going to say here that this V1, V2 same cancelled. I am going to say here that this Z1, Z2 cancelled. I don't have a space right now here, so I am going to write it here, right now here. Whatever we have, that is, you can say P1 minus P2 by rho g is equals to what? HL. इसी अगर आप देखेंगे तो बच्चा एनर्जी का लॉस है in this direction. That is, in the case horizontal pipe flow is going to present in the form of difference in pressure head. So अगर आप यहाँ पर देखेंगे, if I am going to put a piezometer, pressure head कर रहा हूँ. If I am going to put a piezometer here, and I am going to put a piezometer here, तो बच्चा यहाँ पर प्रेशर हेड कैसे आप रिफ्लेक्ट करोगे? हाउ कैन यू रिफ्लेक्ट द प्रेशर हेड? भाई फ्लो चल रहा है, यहाँ प्रेशर है. अगर आपने यहाँ पर इसको तोड़ दिया और जैसे ही आप इसको तोड़ोगे, जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे, तो whatever be the pressure here, that is going to present in terms of what? Height. तो बच्चा flow this, here we have a pressure and this will be reflected in terms of what? Height. So on the basis of this height, you can see the pressure here. और अगर यहां से पर आप आए तो my dear, comparatively यहाँ काम होगा. So on the basis of this height, you can say the pressure head here. Pressure head the P by G. आपको समझ नहीं आया है कि that P1 by rho G minus P2 by rho G is equal to HL. भाई this cancel ना, this here. तो बच्चा मेरे, what is the difference here? That this is going to reflect you the value of what you can say head loss in this case. Are you getting my point or not?
So this is the what HL in this case. Now, my dear, this is your time. Pause your video. Note down this one. One more time, I am going to give you a recap. हमने यहाँ से यहाँ पर एनर्जी क्वेश्चन लगाई. फ्लो की डायरेक्शन में डेफिनेटली एनर्जी लॉसेस होंगे. That we have considered HL. So whatever be the total head here plus head loss. और ये तो मैं पता था कि Z1 Z सेम है. Whatever the velocity here, whatever the velocity here is same according to D. So head loss HL, that is P1 minus P2 by rho. तो इसीलिए आप देखेंगे और आप पीजो में लगाएंगे और यहाँ पर भी पीजो में लगाएंगे तो you will see that in the flow direction here the pressure that is going to be what decrease. So the loss is being reflected in terms of difference in the water pressure in this case. Please note this one, do it fast. My dear, now हेड लॉस को यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर दे तो और बेटर है. ठीक है, लेवल इज दिस सो दिस HL इन द फ्लो डायरेक्शन हेड लॉस इज तो यहाँ पर भी किया है तो वो डिफरेंस दिखा रहा है. यहाँ पर और कॉम्प्लेक्सिटी करने के लिए डायग्राम यू कैन आल्सो रिप्रेजेंट हियर. Next, after this, my discussion that is going to be start related to what? Flow measurement devices. Very, very good discussion. में हम लोग की एंट्री होने जा रही है. So first I am going to rub this one. Bacha, heading please, flow measurement devices. So this is flow measurement devices. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट and the best device we are going to start here. The first, and the name of that device is Venturi meter. So note the heading here, Venturi meter. So this is Venturi meter discussion. अगर हम यहां पर कहें ना तो फ्लो के मेजरमेंट की दी बेस्ट डिवाइस है. और दी बेस्ट डिवाइस में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बच्चा एनर्जी लॉसेस बहुत मिनिमम है. और इसलिए अगर आप यहां पर देखेंगे तो इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 1 के बहुत क्लोज है. जितनी बातें बोली हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू राइट हियर. द फर्स्ट डिस्चार्ज मेजरमेंट डिवाइस है. So here we are going to measure the discharge measurement. Discharge measurement. My discharge measurement, as you know, meter cube per second. The second thing I am going to say minimum energy losses here. So this is minimum energy losses. And that's why you can say CD value nearly equals to 1. CD होता क्या है बच्चा? CD is equals to Q actual upon Q theoretical. और CD की वैल्यू आपको बताऊं. CD की वैल्यू पहले आप देखिए. So CD value is in range of 0.95 to 0.99. My dear, books to books, a little bit variation is there in the range.
but whatever I have given, that is the what the best. अगर आप CD की वैल्यू को देख रहे हैं तो ये तो आपको पता ही है कि CD की वैल्यू 1 के आसपास आ रही है, और CD है क्या, that the CD is coefficient of discharge, coefficient of discharge. और अगर आप कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू से Q एक्चुअल अपॉन Q थ्योरेटिकल, मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज डिवाइड बाय थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. और बच्चा, whenever you are going to calculate the theoretical discharge, that means theoretical what, you are not going to consider the what head loss. Or when actual discharge you are going to calculate, that means you are going to consider the what head losses. मतलब आप जब हेड लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं, लॉसेस कंसीडर कर रहे हैं और डिस्चार्ज देख रहे हैं, और जब लॉसेस कंसीडर नहीं कर रहे हैं और तब डिस्चार्ज देख रहे हैं, उनका जो रेशियो है दैट इज नियरली इक्वल्स टू व्हाट 1. दैट मींस इन एक्चुअल इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज, लॉसेस बहुत कम है. सो दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू से दैट एक्चुअल डिस्चार्ज इज नियरली सेम एज थ्योरेटिकल. नॉट एग्जैक्टली, लेकिन ये तो क्लियर है इसकी वैल्यू देके कि लॉसेस बहुत कम है. ऐसा क्या हो गया कि लॉसेस इतने मिनिमम हो गए, और ये बात है रिलेटेड टू इट्स कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स, रिलेटेड टू इट्स डिजाइन. सो माय नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और डिजाइन. टेक अ लुक ऑफ माय डिस्कशन माय डियर प्लीज. सो दिस इज अबाउट द कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स. अब अच्छा, पहले आप वेंचुरीमीटर को देखो कि वेंचुरीमीटर होता कैसे. सो द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक अ पाइपलाइन हियर. सो दिस इज द व्हाट पाइपलाइन. This it is like this. I want to cut section of the pipe. इतना काटिए पर वेंचुरीमीटर से कर रहा हूँ. सो वेंचुरीमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल इसी में बना दे रहा हूँ. So it is like this, and it is like this. बट देखो यहाँ पर, this is the वेंचुरीमीटर. देखिए होगा भी वेंचुरीमीटर की नहीं, अब तो देख लिया. अगर आप वेंचुरीमीटर को देखोगे, सो वेंचुरीमीटर, this part converging section, this part diverging section. So this is the converging section, my dear. This is converging section, and this is the what you can say diverging section. और कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग को जोड़ता हुआ दिस पार्ट दैट इज अ व्हाट थ्रोट. So this we have a converging section, this we have a diverging section, and in between this we have what throat. So this part is throat. और throat है क्या, minimum sectional area section. So this is minimum cross sectional area section. अगर नहीं देखे वेंचुरीमीटर, if you have not seen the वेंचुरीमीटर, then feel it like this way. एरिया ज्यादा है,
कम हो रहा है, उसके बाद एरिया बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता दिस इज लाइक अ व्हाट यू कैन से कन्वर्जिंग, दिस इज लाइक अ व्हाट यू कैन से डाइवर्जिंग थ्रोट, खुद ही वेंचुरी मीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? नाउ माई पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर, बहुत सारी बातें यहां पर आपसे करनी है, वन बाय वन आई एम इंटरेस्टेड and listen me carefully because lot of questions they have already asked connected to what reasoning related to venture meter. Numerical discussion we have, a lot of discussion we have, but first I am going to talk about the what reasoning discussion here. First I am interested to talk about minimum energy losses. Why we are going to say minimum energy losses? आपको लगता ही है कि बनाने वाले ने कितना खूबसूरती से इसको बनाया है। See the flow of physics here, my dear. See the flow of physics. ये पानी आ रहा है, ये आ रहा है, और बहुत प्यार से, बहुत प्यार से ऐसे ला जा रहा है, और ये आ रहा है और बहुत प्यार से ऐसे चला रहा है, और ये फ्लो रहा है और बहुत प्यार से ऐसे चले जा रहा है। व्हाट आर कन्वर्जिंग, व्हाट आर कन्वर्जिंग, व्हाट डाइवर्जिंग सेक्शन, इतना प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है कि फ्लो बहुत प्यार से निकल जा रहा है, इतना स्मूथ निकल जा रहा है कि द कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स हाईली रिड्यूस्ड हियर। आपने स्मूथली को कन्वर्ट कराया, इतना स्मूथली इसको डाइवर्ट कराया, कॉलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स मिनिमाइज, और पार्टिकल बीच में कॉलिजन नहीं है तो एनर्जी के लॉसेस नहीं है, ना के बराबर। That's why we are going to say, that's why we are going to say that CD value of this device is very very good, and yearly cost to what 1। ये डिजाइन है, प्यारी डिजाइन है, और अगर आप बैंक के साथ बहुत ज्यादा चेक करेंगे then ultimately device performance is going to be reduced. So the best I'm going to telling you, books to books little bit variation is there, but what I am going to tell you the best range. ये जो डाइवर्जिंग सेक्शन है इसके लिए this angle is what you can say around 5 to 7 degree. For the converging section, if you are looking, this angle is what you can say 21 degree plus minus 1. But I told you the best values. Next, my dear, I am going to take this point for this section pipeline dia 1, and for the throat I am going to consider that this is the what 2. अब कभी कभार ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, and recently they have formed a question in examination and they have written it like this way: a ventrimeter 30 centimeter cross 40 centimeter, 30 centimeter cross 50 centimeter. So you have written as an example a ventrimeter 30 centimeter cross 50 centimeter. Then after that language is there and all that in the problem. बच्चा समझ नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया और मल्टीप्लाई कर गया। If somewhere they are going to write it like this, na 30 centimeter cross 15 centimeter, what does it mean? It means that whatever this is written, this is bacha the value of what D1, and whatever this is written, that this is the value of what D2. Now the next, D2 थोड़ा है जो जनरली ले रहे हैं, that is D1 by generally what we are going to opt here, generally this D2 is D1 by 2. There is a range for D2, range आपको बता दे रहा हूँ. So this D2 range lies, you can say, D1 by 3 to 3 by 4 of D1.
In between this range you can take, but generally opt किया जाता है, that is d2 is what, d1 by 2. और अगर आपने ध्यान दिया हो माय डियर, अगर आपने ध्यान दिया हो, so converging section is short and diverging section is comparatively long, and there is a lot of discussion related to converging as well as what, diverging. मेरे बहुत सारे फिजिकल डिस्कशन इससे एसोसिएट करेंगे, बट द फर्स्ट आई एम गोइंग टू एंटर इन द इंस्टॉलेशन ऑफ द डिवाइस. देन आफ्टर दैट जब मैं उसको कंप्लीट करूंगा, देन आई विल टेक माय डिस्कशन रिलेटेड टू व्हाट कन्वर्जिंग एज वेल एज व्हाट डाइवर्जिंग सेक्शंस. अलोन डिस्कशन विल बी देयर. So this is your time, my dear. Pause your video. Please note down this one. Do it fast. Done, my dear? The next, we are going to talk about the installation here. So heading please, installation. Installation. My dear, after this, note down, maybe horizontal, vertical, inclined. अब देखिए, अगर इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्री में पाइपलाइंस आर लाइक दिस हॉरिजॉन्टल, pipelines are like this vertical, and pipelines are like this inclined. In that you are going to what you can put a ventimeter. आपने उस बीच में वेंटीमीटर लगा दिया, एक सेक्शन काटा, वेंटीमीटर सेट कर दिया. सो ऐसे तुम्हारी स्टडी जो है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंक्लाइंड, 3 केसेस. बट आई एम इंटरेस्टेड टू डील अ केस ऑफ व्हाट, इंक्लाइन इंस्टॉलेशन. और बच्चा, अगर मैंने इंक्लाइन इंस्टॉलेशन का केस डील कर लिया, दैट इज एट अ थीटा. So if I am going to change the theta, then I will take the case of this as well as what, this. I think so point should be clear. चलूँ आगे. So my discussion that is connected to what, incline installation. So note on the heading please, incline installation. Next heading, inclined installation. देखिए, so this is the pipeline and I am going to set up what, venturimeter here. So venturimeter is this. सही बना डायग्राम? My dear, this I am going to rub as well as this.
So I have taken a case of what inclined installation, my dear. So this is the what load direction here is this. And this I have in this section. And another section is this section, throat section. But this is the ward 1 and this is the ward 2. डेटा शो कर रहा हूं, वन बाय वन आपके और क्लियर होते जाएंगे. डेटा फिर दिखा रहा हूं, देखिए that this is I am going to take arbitrary datum level is this. So my dear, Z1 is this and this is the what Z2. Last time हमने जो देखा था that was the case connected to this center. So Z1 Z2 was same जब हम देख के आए थे. अभी हमारा पूरा डिस्कशन चलने जा रहा है and the whole discussion that is going to be concentrated to calculate expression, find the expression for the word discharge. हम discharge की expression find out करेंगे. मैं तो आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ that the expression for the charge, if you are looking here, so this Q theoretical बात हुई, A1 A2 root of A1 square minus A2 square multiplied by root of 2GH. जिस बच्चों को न्यूमेरिकल लगाने हैं वो बच्चे स्टार्ट कर ले. But remember this thing, my idea, that this is the value of what theoretical, this is the equation for the theoretical discharge. तो बच्चों एक चीज क्लियर हो गई, that means सर हमें एक्चुअल डिस्चार्ज की एक्सप्रेशन ही चाहिए. And definitely, my dear, that we have a discussion related to that also. But theoretical discharge का अगर आप एक्सप्रेशन देख लो, याद कर लो, क्यों theoretical इक्वल टू A1 multiplied by A2 divided by root of A1 square minus A2 square multiplied by root of 2GH. A1 A2 divided by root of A1 square minus A2 square multiplied by root of 2GH. बच्चा मेरा स्मार्ट उसको ये क्लियर है सर. A1 A2 that means area of this section, A2 area of throat section. अब बच्चा कह रहे सर what is this H? For this H my whole discussion is going to be what start. बच्चा एक एक चीज आपको पूरी पढ़नी है. H तो आपको तभी पता चलेगा whenever you are going to involve with the what analysis. Now take a look here. ये लेवल थोड़ा समझिए, I'm very close to the board ना, तो पता नहीं चलता है, बट आप समझिएगा. So I'm going to add the energy equation between 1 and 2 section. See, so this is apply energy equation between section 1 and section 2. Or when I am going to apply, my dear, then I am going to say here that total energy here is equals to total energy here. तो बच्चे कह रहे सर ये कैसे कह दिया आपने, हेड लॉस भी तो होगा. तो मैंने कह दिया थ्योरेटिकल है, because I am interested to find out the what theoretical discharge. So what I am going to write here, whatever be the total head here, that is same as the total head here, but I am going to say theoretical. So this is theoretical approach. First I am going to apply here theoretical approach. So bacha, this is what P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 is equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. बच्चे कह रहे लेकिन सर हेड लॉस तो लेना चाहिए, अभी ले लेंगे, एक्चुअल पे जब बात करेंगे देन वी विल मॉडिफाई इट, बट अभी ये तो देख लो.
Now the next discussion here. I am going to say here, but now you tell me, according to continuity, if you are looking here, area here is going to be decrease. So I think the velocity here is going to be what? Increase. So V2 ज़्यादा होगा as compared to what? V1. So V2 square by 2G will be what? More. तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, देखिएगा. This is P1 by rho G plus Z1 minus P2 by rho G plus Z2, and bacha, this is the what you can say V2 square minus V1 square by 2G. And bacha, for your kind information, whatever be the difference in the piezometric head, this is piezometric head, this is also piezometric head. Whatever be the difference in the piezometric head between section 1 and through section 2, that we are going to say H. इसी को H बोलते हैं. अब बच्चे को क्लियर हो रहा है सर H क्या है. So this is H. तो मैं लिख रहा हूं H what difference in piezometric heads between normal section 1, normal means this, and throat section 2, and throat section 2. So it is like this. Acha, for your kind information, if I am going to write it, then I am going to write it like this way, that this is H. This is V2 square minus V1 square by 2G. ये इसको H लिख दिया ना. So in this way, I am going to say here that this is your V2 square minus V1 square is equals to 2G into H. मेरी चाहत तो है डिस्चार्ज की, और मुझे डिस्चार्ज कहीं दिखेगा. आप मुझे गाइड करो, मुझे क्यू का टर्म कैसे लाना है. बट कहता है सर discharge is equals to A multiplied by velocity. So my dear, so this is A1 V1 is equals to A2 V2, continuity, and that is equals to what? Discharge. So this is equals to what? Discharge. This is actual or theoretical? Tell me. This is actual or theoretical? Theoretical. जब आपने लॉस लिया नहीं है तो जो डिस्चार्ज आएगा वो theoretical है. So this is theoretical. So bacha, this is Q. V2 and V1 values we are going to put Q upon A1 and Q upon A2. नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर. V2 is what? V2 Q upon A2. V1 is what? Q upon A1. So in this way, दोनों में तो Q कॉमन आ जाएगा, Q theoretical square 1 upon A2 square minus 1 upon A1 square, and that is equals to what you can say 2G into what? H. So my dear, for your kind information, if you are looking here, so this is what you can say Q theoretical square. This is A1 square minus A2 square divided by A1 square into what? A2 square is equals to 2G into what? H. अगर आप इसको लेके जाएंगे और रूट लेंगे, ध्यान दीजिएगा. So this is Q theoretical. अच्छा, this is यहाँ पर आ रहा है A1 A2 स्क्वायर में,
and we are going to take the what root of this. So this is A1 A2 divided by root of A1 square minus A2 square multiplied by root of 2GH. आप देख लो एक बार, मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं पूरा एक्सप्रेशन एक साथ आपको दिखाऊं सो दैट यू कैन इजिली कनेक्ट द सब्जेक्ट. माय डियर, दिस इज q theoretical square. दिस आई एम गोइंग टू राइट हियर. रूट लेंगे सो a1 a2 का हट जाएगा रूट, बट इसका रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में, और रूट ऑफ 2gh. आई एम गोइंग टू चेक. यस, इट्स ओके. और शायद मैंने आपसे यही कहा था कि q theoretical is equals to a1 a2 divided by root of a1 square minus a2 square multiplied by root of 2gh. And this thing I am going to make it in the block, my dear. आज के बाद ये फॉर्मूला को याद होना चाहिए. और आज के बाद क्यों, आज अभी से याद होना चाहिए. Take your time. Pause the video, do it fast. Yes, my dear, completed. तो अभी तक हमने जो भी किया है वो थ्योरेटिकल लेते हुए किया है. अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल, और जब हम एक्चुअल लेंगे तो हम लॉस कंसीडर करेंगे. सो दिस टाइम वी आर गोइंग टू कंसीडर द व्हाट, लॉस. सो बच्चा, मेन डायग्राम विल रिमेन सेम. दिस थिंग आई एम गोइंग टू now. So going to continue with the discussion, and this time we are going to say the actual approach. So we are going to apply the energy equation between section 1 and section 2. So this is actual approach. Apply energy equation between normal section 1 and through section 2. Okay. So the point of discussion here that this is energy here and energy here. Actual है तो लॉस भी कंसीडर करेंगे प्लस लॉस. So this is your V1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2 plus लॉस HL. आप देख लीजिए एक बार. चलो इस बार ले लिया. नेक्स्ट, my point of discussion here, my dear, that this is your जो हमने पहले देखा था P1 by rho g plus Z1, इधर लेके जा रहे हैं. So this is your minus P2 by rho g plus Z2 is equals to this is the what, V2 square minus V1 square by 2g. Earlier we have seen this. और जब हमने इसको लिखा था, ये आपको यह क्लियर होना चाहिए that this is the what, H. But this time one more term is there and that is what, head loss term. So this is HL is also be there. This is HL. Okay.
सो माय डियर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सो दिस टाइम एच एल इधर माइनस करेंगे, दिस इज एच माइनस एच एल is equals to v2 square minus v1 square by 2g. My dear, we are going to multiply by 2g here. So this is your v2 square minus v1 square by 2g को इधर multiply 2g. This is what h minus hl. Clear? Now my point of discussion here. बच्चे मेरे स्मार्ट, अब बच्चे मुझे बताएगा how to get the expression of discharge. Ultimately तो हमें discharge ही चाहिए ना. लेकिन सर apply continuity. So this is apply continuity. बहुत ध्यान से देखिएगा. और continuity whenever we are going to apply, so v1 v2 we are going to change in terms of what discharge. और जब हम discharge के terms में change करेंगे, so this is the what you can say a1 v1 is equals to what a2 v2 तो होता ही है बच्चा. The next thing that is equals to discharge. Now you tell me, theoretical or actual? Theoretical or actual? Approach कौन सी चल रही है? Actual. So जो discharge यहाँ से आएगा, that is what? Actual. So this is actual. So my dear, this I am going to put here. अब अगर मुझे V2 की वैल्यू रखनी है, if I am interested to put the value of V2 here, so V2 is what? Q actual divided by A2. V1 की वैल्यू रखनी है Q actual divided by A1. So in this way Q actual तो कॉमन हो जाएगा बच्चा. Q actual keep it outside. This will becomes 1 upon A1 square, sorry 1 upon A2 square minus 1 upon A1 square. अब देख लो भाई, Q upon A V2 था, V2 स्क्वायर था. Q upon A1 Q upon A2 था, Q actual upon A2 V2, Q actual upon A1 P1. I think the point is clear. Now this is the what you can say 2g, this is h minus hl. Clear? अब इस एक्सप्रेशन को अगर लिख रहे हैं, so this will becomes q actual square a1 square minus a2 square divided by a1 square into what? A2 square is equals to 2g h minus hl. Now the next, भैया concentrate करिएगा प्लीज. अब अगर आप यहां से देखेंगे, so this will becomes what? Q actual is equals to A1 A2 पर लेके जाइए. So this is A1 into what? A2 divide by root of A1 square minus A2 square multiplied by root of 2g h minus hl. So my dear, this will becomes Q actual is equals to A1 into A2 divided by A1 square minus A2 square multiplied by root of 2g h minus hl. आप देख लो एक बार, फिर आगे चलेंगे. In the same way I am doing my analysis whatever you have seen earlier. मैं अप्रोच को चेंज नहीं करता हूं, so that आपने जो चीज देखी है उसी चीज से आप आगे ग्रो कर जाओ. Q actual स्क्वायर था बेटा, Q actual स्क्वायर का अगर आप रूट लोगे, और दिस वी हैव टेकन हियर एंड दिस डिनोमिनेटर, सो इसका रूट होगा तो दिस इज व्हाट A1 A2 एंड दिस इज इन द डिनोमिनेटर. रूट लेंगे तो रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर. नेक्स्ट
इसका रूट लेंगे रूट ऑफ 2gh माइनस HL. पॉइंट शुड बी क्लियर. चलूं आगे. डेफिनेटली अगले 2 स्टेप में आप एंजॉय करोगे मोर एंड मोर इफ यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड अर्लियर. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहा है तो डेफिनेटली अगले 2 स्टेप आप एंजॉय करने वाले हो. माय डियर, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि दैट दिस इज द व्हाट क्यू एक्चुअल, दिस इज इक्वल्स टू a1 multiplied by a2 divided by root of a1 square minus a2 square multiplied by root of 2g, and this is I am going to write here root of h minus h. Take a look. Is it any problem to anyone if I am going to write it this way? मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने तो बस इसको ये किया दैट दिस रूट आई हैव टेकन सेपरेटली. दिस आई हैव डन इट लाइक दिस. अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं देन आई कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस वे कि दिस इज योर I'm interested to show you each and everything on the board, so that's why I'm going to write it like this way, my dear. If I'm going to write it like this way, my dear, that this is I'm going to divide by root of h and multiply here by root of h. Take a look. Any problem to anyone? बच्चा, whatever we have written this, पहले तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया, उसके बाद रूट ऑफ एच हियर एंड रूट एच हियर. बच्चा मेरा स्मार्ट, बच्चा मुझे बताएगा वॉट एवर दिस वी हैव रिटन हियर. नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस. आई थिंक सो कि दैट यू हैव सीन दीज काइंड ऑफ थिंग्स. जल्दी बोले, जल्दी. You have seen these kind of things. Yes, this is Q theoretical. So dear, my dear, what you have read this, that is Q theoretical. Q theoretical. बच्चा मेरा स्मार्ट, उसको ये पता लग गया सर दिस Q actually equals what Q theoretical multiplied by something. और ये मैंने आपको पहले दिया था Q actual divided by Q theoretical, that is coefficient of discharge. बच्चा समझ गया सर whatever you have written is actually this is so called, you can say what, CD. So this is h minus HL upon root of h. तो बच्चा हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि दैट दिस इज आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस वे. दोनों में रूट लगा है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक दिस वे, माय डियर. टेक अ लुक. सो दिस इज योर रूट ऑफ h minus HL and this divide by h, and this term I am going to say that this term is what, CD. In this, if we are going to write the expression for the discharge here, the expression for the discharge here is this. I don't have a space right now here. First of all, note down this one. This is a space I have used here. So, no matter whenever you are going to start, note. First of all, note down this one. Then note down this one. This complete. After that, we have a discussion this. Pause your video. Do it fast, my dear. Done here. So अब लास्ट एक्सप्रेशन पहुंचे हैं, अब डिस्कशन इससे आगे स्टार्ट हुआ. देखिए क्या है.
So whatever expression we have seen here, one more time I am going to write, need to write down for you. So this is Q theoretical expression, देखिए, sorry, Q actual, that is A1 A2 root of A1 square minus A2 square multiplied by root of 2G multiplied by H minus L, and whatever we have done that was H here, H here. ठीक है, ये मैंने किया था, और ये तो आपको क्लियर हो ही गया था कि दैट दिस इज योर Q theoretical and this is your CD. So this is CD. So in this way I'm going to write the expression in this way, that this is Q actual is equal to CD multiplied by A1 multiplied by A2 divided by root of A1 square minus A2 square multiplied by root of G. So my dear, if you are looking here, so this is the expression here, Q actual. This is CD times of A1 multiplied by 2 divided by root of A1 square minus A2 square A1 square minus A2 square multiplied by root of 2GH. Root of H, you can also write it this way, ना? अरे ठीक है, आप H अंदर लिख दिए, X से रूट करके लिख दिया. Idea, my point of discussion here. अगर आपने एक वेंचुरीमीटर बना लिया है, so for that वेंचुरीमीटर this particular data is what fixed. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि that if you are looking about this, for a venturimeter this is what constant. So this you can say constant of venturimeter. क्यों भाई, क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि A1 फिक्स हो गया, A2 फिक्स हो गया, G तो वैसे ही फिक्स है. So my point of discussion, this is constant of venturimeter. So this is constant of venturimeter. Now my dear, this is your time. Please note down this one. Do it fast. I am side here. और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है, इसके ऊपर बनता है. That I will show you definitely. But first note down this one. Do it fast. Now, so dear, as I told you, now we are going to see a numerical problem here. Take a look. See. But you also start to note down the problem. If the coefficient of discharge of a venturimeter is 0.96, so problem is if the coefficient of discharge बी रेडी का कैलकुलेटर आपको लेना है. The coefficient discharge of a venturimeter is 0.96. The venturimeter constant is venturimeter constant is 0.3
meter cube per second. Okay. 0.3 2.5 meter per 1.5 per second, and the Venturi head is 0.2 meter. The discharge through the Venturi is the discharge through the Venturi meter is. Bacha, read the problem, note down the problem, pause your video. First of all, take a attempt the problem. Then we have a discussion. Done. I think you have taken your attempt. I'm going to start with solution part. The coefficient of discharge of the Venturi meter is 0.96. That means they have given value of CD. Okay. The Venturi meter constant is 0.3 to the power 0.5 second. Venturi meter constant बात कर रहा है. Okay. And the Venturi head they have given. Venturi head, that means they have given that this value, H value, this is 0.2. Which is ये. If you have earlier not seen this kind of problem, you are not in the comfortable position at time of examination. अगर आपने पहले नहीं देखा है, because to the power 2.5 per second, if you are doing these types of things in examination, so it's very difficult to dice these things. M की power 2.5 लगी हुई है. क्यों? एक स्टेप जो बता रहा हूँ, that's going to help you whenever you are going to involve the problems in my subject. बच्चा अगर इसको आप देख रहे हो ना, तो जरा इसकी यूनिट देखते हैं. My point of discussion that is connected to what unit? यूनिट इसकी बात कर रहे हैं. यूनिट इसकी कांस्टेंट की बात कर रहे हैं. कांस्टेंट वेंचुरी मीटर. So this is meter square multiplied by meter square divided by. This is meter square ही तो होगा, एरिया का ही तो टर्म आता है और रूट उसका आप ले. So this is root of meter square to the square multiplied by this is the what? Meter per second square. So if you are looking here, so whatever they have given, that this and this is going to be what? Cancelled in this way. So this is meter square, this is m to the power 0.5 per second. So unit here will becomes what? M to the power 2.5 per second. One of time in a quantitative examination they have asked such problem. This is not objective problem, they mixed with the animation problem. But in future they will form such an objective problem. बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है. अगर बच्चे ने ये नहीं देखा है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, रेयर चांसेस कि फॉर्मूला लग जाए. कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं. If you are looking the calculation part here, so my dear, that this is the what Q actual if you are looking here. So अब तो कुछ करना ही नहीं था. CD they have given, CD value is what? 0.96. So this value is 0.96 multiplied by this value. This is this value. This value they have given, this is 0.3 multiplied by Venturi head, they have given this root of 0.2. So calculator. So this is root 0.2 multiplied by 0.3 multiplied by 0.96. So this is 0.12879. So this is 0.12879. This I have written in meter cube per second. You can also convert it in liters multiplied by 1000. Point clear बच्चा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? First of all, whatever this you have written, वहीं पर first of all unit for this.
Then after that, this numerical and this solution. Do it fast. It's your time. डन। आइडिया अभी तक हमने जितना भी देखा है वो ये देखा है कि q actually is equal to c multiplied by a1 into a2 divided by root of a1 square minus a2 square multiplied by root of 2gh। सारा गेम जो है एक्सपेरिमेंटल गेम दैट इज कनेक्टेड टू व्हाट h। हाउ टू मेजर h, और h है क्या? दैट इज द डिफरेंस इन द व्हाट पीजोमेट्रिक हेड्स। तो अगर आपको h मेजर करना है सो दैट यू आर इंटरेस्टेड टू मेजर द डिफरेंस इन द व्हाट पीजोमेट्रिक हेड्स। और अगर ये आपको काम करना है दैट मीन्स आपको प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस चाहिए। सो माय नेक्स्ट डिस्कशन दैट इज कनेक्टेड टू फॉर कैलकुलेशन ऑफ h, and here we are going to involve the piezometers, here we are going to involve the U-tube manometers, and also in the U-tube manometers we are also going to involve with the what inverted U-tube manometers। तो एक नहीं 3 केस डिस्कस करने वाला हूं फॉर द कैलकुलेशन व्हाट h। वन बाय वन टेक अ लुक एट दैट प्लीज। So this is with piezometers for h, and this is with piezometers। My dear, this I have taken very first of all। पाइपलाइन आई हैव टेकन लाइक दिस, आई एम गोइंग टू सेट द वेंचुरीमीटर। अच्छा डायग्राम बहुत अच्छे से बनाइएगा क्योंकि जो आप बना रहे हैं दैट द सेम डायग्राम यू आर गोइंग टू व्हाट रिवाइज, एंड इट टेक्स टाइम। डायग्राम बनाने में टाइम लगने वाला है। So it is like this। कन्वर्टिंग सेक्शन शॉर्ट, डाइवर्जिंग सेक्शन दी है। Next, my dear, there is a flow, there is a flow। अच्छा डिक्टम मैंने यहाँ पर लिया है। So for 1 and for 2 datum है, this is Z1 and this is Z2। Now going to say मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या है? My objective is to find out the value what h, और बता h क्या है? This h is E1 by rho g plus Z1 and minus this is what you can say P2 by rho g plus Z2।
सो अल्टीमेटली अगर यहां पर देखोगे तो P1 है, Z तो पता ही है, Z1 पता है, Z2 पता है. For this we are going to attach the what? Piezometers. So बच्चा यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ. This I have taken point 1 here. देखा नहीं था 2 piezometer attachment. So it is like this, and that is like this. Now the next 4.2, it is like this. अब यहीं से कई रीजनिंग के क्वेश्चंस क्रॉस करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं. Whatever I am going to discuss here, in that I am going to take so many reasoning discussions. My dear, if you are looking here, velocity here is going to be what? Decrease. Sorry, if you are looking here, area here is going to be what? Decrease. Velocity here is going to be what? Increase. और अगर velocity बढ़ रही है तो here the pressure is going to be what? Decrease. I repeat. बच्चा area decreases, velocity increases, pressure decreases. तो इसे अगर आप यहाँ देखेंगे, so it is something like this. Comparatively here, area is more. Area ज़्यादा है, velocity कम है, तो pressure ज़्यादा है. So I am going to say here, if you are looking here, so it is something like this. Whatever be the density of the fluid here, whatever be the density of the fluid here, whatever be the density of the fluid here, that is same, that is what rho. मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा my dear. I am going to say here, अगर piezometers, you have taken the piezometers, so whatever be the fluid here, whatever be the fluid here, whatever the fluid here, that is what same. So the density will is what same. Next, अगर बच्चे कहीं ये सोचे में 1% दिक्कत आई है, sir you told us that area decreases, velocity increases, pressure decreases. You can also say it like this way. This is comparatively large, this is comparatively more, and this is comparatively less. So my dear, if you are looking this term ना, अगर आप ये term देखें, तो ये term तो यहाँ से आप देखो यहाँ से तक है. भाई यहाँ से है तो you can what data head ना, and data head to this, data head to this. This is what pressure head, P1 by G. And this is comparatively large, this is comparatively small. तो अगर आप यहाँ से यहाँ देखेंगे, so this should be what small. Are you getting my point or not? Pressure head अगर आप बता रहे हैं, I repeat, data head तो clear हो गया आपको. This. If you are looking the pressure head here, so from this to this height, that is going to represent the what pressure head. If you are looking the pressure head here, 2 to this height, that is going to represent the what pressure head here. That is what, this is P2 by rho g, and this is what P1 by rho g. So अगर आप देख रहे हैं my dear, so this value is comparatively large, तो यहां से यहां तक की वैल्यू है, and this value is comparatively small. तो मैं तो समझ ही गया था कि जब मुझे ये डायग्राम बनाने हैं तो दिस शुड बी व्हाट कंपैरेटिवली स्मॉल. तो ये बढ़ भी रहा है, दिस वैल्यू विल बी व्हाट कंपैरेटिवली लेस. और वैसे भी क्लियर है, इफ यू आर लुकिंग हियर, एरिया डिक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, देन प्रेशर डिक्रीजेस. नेक्स्ट, my point of discussion here that this is I have taken. बच्चे जब भी ये डिफरेंस होता है, this difference we are going to say that this is what x, and x is a part of what you can say reading.
पूरा का पूरा आपका प्रेशर में मेजरमेंट निकाल के लेके आया हूं इन द सेम वे वी हैव अ डिस्कशन दैट वॉट एवर बी द डिफरेंस दैट इज अबाउट रीडिंग. For our convenience, I am going to take that this is equals to what y. This I am going to assume y assume for my convenience. And my dear, my point of discussion here, if you are looking this, so this is what z2 minus z1. Now the point of discussion, I am going to say the value of what p1. अब p1 की वैल्यू दिखा रहा हूं. अच्छा, p1 is equals to p1 पे वैल्यू देख लो, this rho into g. अच्छा, this height. So ये कितना है x, then after that this is the what y, then after that this is the what z2 minus z1. So this is x plus y plus z2 minus z1. आप देख लो, समझ लो. मैं आपको यही तो बोल रहा था कि यहां जो प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रॉम दिस टू दिस हाइट प्रेशर हेड. दो हेड तो बहुत अच्छे से क्लियर कर ले गया हूं आपको, डेटा हेड भी क्लियर है एज वेल एज यू कैन से प्रेशर हेड. एंड आफ्टर सम टाइम वी हैव अ डिस्कशन रिलेटेड टू व्हाट काइनेटिक हेड और डिवाइसेस के थ्रू दिखा दूंगा. चलूं आगे. So I am going to here my here that this is the what even rho g z1 इधर ले आइए, z1 is equals to x plus y plus z2. This is the next I am going to say about the value of p2 here. So this is p2 is equals to what? अच्छा, यहाँ का प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस हाइट कितना है y. So this is rho into g into what y. So my point of discussion here that this is the what p2 by rho g is equals to y. हमें क्या चाहिए? So plus z both side. So this is plus z2 plus z2. Now I am interested to find out the value of h experimentally. So for this, h is p1 by rho g plus z1 minus p2 by rho g plus z2. This is the what x plus y plus z2 minus this thing y plus z2. So I am going to say here that this and this is going to what cancel. So ultimately, if you are looking here, so this is the what h is equal to what x, and this thing I am going to make it a what dog. आज के बाद क्या आप पीजोमीटर यूज कर रहे हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एच. ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वट एवर बी द रीडिंग हियर दैट इज एच. इट्स नॉट नीडेड टू डिराइव द थिंग्स. माय डियर, वट एवर वी आर गोइंग टू डिराइव द थिंग्स हियर, मैंने वेंचुरी मीटर डिराइव करके आपको दिखा दिया. But in the objective papers, they are not going to ask the derivations. Unless until you have not seen the things like this way, you are not in a comfortable position to apply the formula. मैं बार बार यही कहता हूं कि मुझे यहां पर करना पड़ता है एक एक चीज, एक एक एक्सप्रेशन डिराइव. बट योर वर्क इज टू सी, टू अटेंड द क्लास प्रॉपरली, एंड आफ्टर दैट things are clear. Easily you can apply the formula in the objective problems. And limited doubts. जीरो तो कभी नहीं होगा, लिमिटेड डाउट्स होंगे. सो आज के बाद whenever you are going to say about the piezometers for the measurement of h, then ultimately whatever be the reading here, that is actually the value of h. And h is what? Difference in the piezometric heads between normal section 1 and throat section 2. So my dear, please note down this one, do it fast. I'm here. Done.
बच्चा आपकी बार हम लोग यूज कर रहे हैं यूट्यूब मैनोमीटर्स विद डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर विद सिंपल डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर. Then after that, we have a discussion with inverted YouTube manometer. Two discussions. So this is with simple differential YouTube manometer. देखिए, with simple differential YouTube manometer, benchmate is this. Converging portion, diverging portion, like this. अब बच्चा YouTube फिट कर रहे हैं, देखिए क्या. One of the point I am going to do here, here at the outer section, this is one. Tap here. One, two. Like this. 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 Now my point of discussion here. ऑलरेडी मैं आपसे ये बोल चुकी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वेलोसिटी हियर कंपैरेटिवली मोर, सो प्रेशर हियर इज कंपैरेटिवली लेस. ये बात अभी हो चुकी थी और आपको बता चुका हूँ, एक नहीं दो तरीके से, दैट वी हैव अ डिस्कशन इन टू वेज. नाउ माय पॉइंट ऑफ डिस्कशन, तो अगर आप यहाँ पर मैनोमेट्रिक फ्लूइड ले रहे हैं, सो यू विल गेट द थिंग्स लाइक दिस वे. यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से पीजोमेट्रिक हेड कम और यहाँ से ज्यादा. That's why we are going to say that this is the voltage P1 by rho g plus Z1 is comparatively more minus this is what P2 by rho g plus Z2. चलो. Now the next thing here, that whatever be the difference here, this is what x, and this x is a part of what? Reading. So this is reading. And बच्चे यहाँ से यहाँ I am going to assume here, and this is what y assume. The next is what difference here, that this is what Z2 minus Z1. Done. ध्यान दीजिएगा, that this we have taken the what manometric fluid, this is the what rho m. अच्छा, whatever be the density of the fluid here, whatever be the density of the fluid here, and whatever be the density of the fluid here, that is same, because same fluid here.
अब इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए. This we have used about manometric fluid here, and here density should be same, क्योंकि सेम आ रहा है. आप मुझे बताइए कि इसमें अगर वाटर मूव कर रहा है तो यहां पर आप ऑयल रखेंगे या मरकरी रखेंगे? टेल मी. यू कैनॉट पुट द लाइटर फ्लूइड हियर माय डियर. आप लाइटर फ्लूइड कैसे करने लग जाएंगे यहाँ पर पुट? बिकॉज अगर ऑयल हैवियर है तो ऑयल तो नीचे चला जाएगा, और सॉरी वाटर अगर हैवियर है तो वाटर तो नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा. So my point of discussion here, कि if you are going to say that the water is running here, then we are going to use the what? Mercury here. That means अगर मैं generalized way में कहूँ, so in this case, this is the what you can say rho m should be greater than what? Rho. Condition is this. If you are using oil here, pipeline में oil run कर रहा है, तो heavier than that you can put the fluid here also. Water here, then I am going to say heavier density fluid here, manometric fluid here. Just I have taken an example that water here, so mercury I am going to put here, not oil, because oil lighter हो जाएगा. अब तो कुछ नहीं है. We are interested in that this calculation. So बच्चे हम क्या करेंगे कि that this is your P1 ना, P1 नीचे चल रहे हैं. जिस बच्चे स्टैट के कंसेप्ट क्लियर है उसको ये तो पता चल ही गया है. सर whatever be the pressure here and whatever be the pressure here, it is same. Fluid statics discussion. My dear, यहाँ से यहाँ पर आ रहा हूँ. So this is P1. नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना? Density is not going to change. Y x plus rho into g into x plus y. यहाँ से नीचे आइए P2 से. So this is equals to what? P2 plus this to this rho into g z2 minus z1 plus y. We are here coming down here, but manometric fluid. That is what? Rho m into g into x. So this is plus rho m into g into what? X. But first of all, if you are looking here, so this y and this y cancelled. Rho g. And the whole expression I am going to divide by rho g. मुझे तो इस फॉर्म में चाहिए ना. So the whole expression I am going to divide by rho g. For your kind information here, if you are looking here, so this is the what you can say P1 by rho g plus rho g divide x is equals to P2 by rho g divide plus z2 minus z1 plus rho m upon rho into x, g cancelled. I repeat, this divide by rho g cancel, only remains x. Divide by rho g cancel, z2 minus z1. Divide by rho g, rho remains left, g cancelled, x. My point of discussion here, my dear, that this is your, you can say P1 by rho g plus z1. इसको इधर ले आए, इसको भी इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस you can say what P2 by rho g plus z2 फॉर kind information x को इधर लेके जा रहा हूं, तो ये x कॉमन बाहर, दिस इज रो m अपॉन रो माइनस 1. और बच्चा मेरा स्मार्ट, बच्चे को दिख गया कि दैट दिस यू हैव रिटन द व्हाट h.
my dear, this is I'm going to write, this is I'm going to write, this is what H, and this H is what X, rho m upon rho minus 1, and this thing I'm going to make in the what block. लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीजोमेट्रिक हेड डिफरेंस इन बिटवीन सेक्शन 1 normal, section 1 and section 2. Whenever you have a case that the density of the magnetic fluid is more as compared to the water running fluid. So this is applicable when rho m is greater than what? This is UI, my dear. Please note down this and do it fast.